हाय देयर। तो भैया अखिलेश और बहन प्रियंका अभी तक खामोश क्यों हैं? Why have they said absolutely nothing on the comments made by Charanjit Singh Channi yesterday? Does this mean that they endorse those comments? Is this a part of a larger grand scheme by the Congress? Is the Congress party getting desperate? Do they realize that the challenge from the Aam Aadmi Party is real? Lot of these questions I've also been thinking, and I'm sure these are questions on top of your mind also. Because देखिए, एक नेता क्या कमेंट देता है वो सिर्फ कमेंट जरूरी नहीं है, उस कमेंट के पीछे की क्या स्टोरी है, उस कमेंट को लेकर आगे क्या किया जाता है और उस कमेंट से उस पर्टिकुलर पार्टी या नेता को किस तरह का विश्वास है कि वो उसके एडवांटेज में प्ले करेगा. दैट इज द आर्ट ऑफ रीडिंग पॉलिटिक्स. नाउ Charanjit Singh Channi, right from day one, ever since he has become the chief minister of the state of Punjab, has handled all issues very deftly. Many said that he handled Sidhu also very well. And that was right. But then, how is it that just 4 days before polling in the state, Charanjit Singh Channi makes a comment like this? And that too in the presence of a Priyanka Gandhi Vadra, who's standing next to him, who's smiling, who's clapping, who's cheering him. So does this mean Priyanka did not understand the gravity of the comment? Or does this mean Priyanka was a part of a larger design of the Congress party right now in Punjab? देखिए, इससे पहले आगे बढ़े, क्योंकि प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ. हो सकता है आप में से बहुत लोगों को याद हो, बट जिनको याद नहीं है, when the budget was presented, Rahul Gandhi had put out an entire statement saying that budget में कुछ नहीं है. To which Nirmala Sitharaman, the finance minister, had reacted. And she said it's a UP type comment. UP type comment. Now, Priyanka Gandhi Vadra was one of the first leaders to react to that comment. तब उन्होंने बोला था कि 25 करोड़ यूपी की जनता का अपमान किया है निर्मला सीतारमन ने. तो अगर हम उन्हीं स्टैंडर्ड से देखें तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने उनके अपने मुख्यमंत्री चन्नी साहब इस तरह का कमेंट देते हैं. तब क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का यहां पर अपमान हो रहा है? या कांग्रेस ये जानती है कि यूपी में तो दे आर नॉट अ प्लेयर, दे आर ऑल राइट, दे कुड बी वर्किंग हार्ड, बट दे आर वर्किंग फॉर 2024. दे आर नॉट इमीडिएटली विनिंग द यूपी इलेक्शंस, बट पंजाब में उनका चांस है एंड दे वांट टू रिटेन दैट स्टेट desperately. Is that why Priyanka Gandhi Vadra is still quiet? And for those of you wondering what I'm talking about, listen into what Channi has said. Listen into this comment here. So now that you've heard that comment that Charanjit Singh Channi made, I think no one will say that what he said was right. Everyone needs to condemn this comment. But why has Channi played this regional identity card right now? ये पंजाबियत की बात कहाँ से आ गई और क्यों आ गई और क्यों इसी टाइम पर आई है? अब अगर आप पंजाब में क्या हो रहा है, if you just look at it very, very closely over the last few days, you would realize that something is happening. Different kind of comments, different kind of reactions. Suddenly, there is a lot of conversation about the AAP. Now, this comment from Charanjit Singh Channi, does this betray their nervousness? Does this tell us that AAP is actually emerging as a challenger, and to counter him, Charanjit Singh Channi has played the card? Because आप ये याद रखिए कि जब पंजाबियत की बात आती है तो he is wanting to consolidate all the Punjabi votes. पंजाबी अस्मिता की बात करी है. अब चरणजीत सिंह चन्नी ने कुल्हाड़ी तो चला दी है, कुल्हाड़ी उन्होंने फेंक दी है.
अब वो कुल्हाड़ी कहाँ लगती है, क्या उनके अपने पैरों पे लगती है या किसी और के पैरों पे लगती है, ये तो हमें 10 मार्च को ही पता चलेगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी इस समय प्रेशर में क्यों है? Why is he looking so nervous? What is the reason? One is obviously the fact that the Congress party realizes that AAP is becoming a challenger. On the other side, you recall what happened as far as the ED raids go, the action against his nephew, and the entire allegations of sand mining. So is that weighing on the mind of Charanjit Singh Channi? And is he also sensing कि ये जो पूरा दलित चीफ मिनिस्टर का कार्ड कांग्रेस ने खेलने की कोशिश करी थी वो चल नहीं रहा है, उस तरह का कंसोलिडेशन उनके फेवर में नहीं हो रहा है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आप पंजाब में इस समय किसी से भी अगर बात करते हैं ना, दे ऑल से वी वांट अ चेंज, हमें बदलाव चाहिए। नाउ दिस वर्ड चेंज कुड मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इस चेंज का सीधा सीधा मतलब है आप, और ये सारे लोग बदलाव चाहते हैं इन द फेवर ऑफ द आम आदमी पार्टी। ऑन द अदर साइड, द कांग्रेस हैज ट्राइड टू डीलिंक इटसेल्फ फ्रॉम द एंटी इनकम्बेंसी इट हैड व्हेन कैप्टन अमरिंदर वाज द चीफ मिनिस्टर। आपको याद होगा व्हाट प्रियंका गांधी सेड। शी सेड उस समय हमारी सरकार नहीं चल रही थी, ना ही वो हमारी सुनते थे, ये सरकार कहीं और से कंट्रोल हो रही थी। द डायरेक्ट रेफरेंस वाज टू द बीजेपी। So many would say it's foolish, because if the Congress High Command was aware that Captain was working under someone else's duress, why did they not sack him earlier? So has the Congress somewhere realized that even that anti-incumbency could be working against them? Charanjit Singh Channi has played this card of identity politics. He has tried to consolidate the large portion of the state under one banner of पंजाबियत। पंजाबी अस्मिता पर उन्होंने ये चुनाव को घुमा दिया है, लेकिन क्या चुनाव वहां घूमता है या नहीं, ये तो हमें अब 10 तारीख को ही पता चलेगा। But just a little bit more about identity politics. Identity politics is nothing new in the country. You would recall that Prime Minister Modi, when he was the chief minister of the state of Gujarat, was I think one of the first chief ministers to speak about Gujarati pride, about Gujarati अस्मिता। कई बार कई इलेक्शन रैलीज में उन्होंने ये बात बोली है। उसके बाद बहुत दूर नहीं आपको जाना पड़ेगा, जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, what did Mamata Banerjee do? She played the same identity politics card. The Bengali pride, the Bengali pride versus the outsider। वहां पर तो उन्होंने प्रधानमंत्री को, अमित शाह को और योगी आदित्यनाथ को बाहरी बता दिया था। She called them outsiders. So what is this kind of politics and why do netas resort to this? I'm sure you must also be thinking about this. तो मुझे क्या लगता है ना, कि जब नेताओं के पास और किसी भी बात का जवाब नहीं होता, when they fail on issues of development, when they fail on issues that concern you and me, when they want to distract you from core issues of employment, of job, of everything else, of their accountability, they will play this card. तब वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलते हैं और करते हैं। अब देखिए, जब पंजाब की ही बात करें आप, अकाली दल is also a party that has a very very strong regional connect. It is the oldest regional party in the country. और अकालियों ने भी बहुत ही रीजनल पॉलिटिक्स और पंजाबी कार्ड खेला है, लेकिन इस इलेक्शन में अकालीज वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे जो उनका डेकेड रूल ऑफ मिस गवर्नेंस, करप्शन, ड्रग मेनेस, मजीतिया वाला एंगल, ये सब उन पर हावी है। बट दिस टाइम द कांग्रेस हैज प्लेड the identity politics card in the state of Punjab. And as I said, they are obviously not looking to an Uttar Pradesh, because they know that they are not in a very strong position in the state. So that is their politics. Does this explain why Priyanka is quiet? But like I said at the beginning of this video, why is Akhilesh quiet? Akhilesh hasn't spoken up.
Do you believe that this could actually get him caught now? What if tomorrow he's asked that, what does he have to say about this? The story is developing very fast. Thank you for watching. Do like, subscribe, and share with your family, your friends, your colleagues if you like it. And in the comment section below, let me know what you think of the entire issue and whether you believe that this card of Punjabiyat that has been played by Charanjit Singh Channi could help or damage the Congress.